25 आए हैं, चलो 26 में मानता हूँ आज प्रेजेंट है। तो इसको देखते हैं अगर हम पूरा कर सके इस रिजल्ट को। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मैं कह रहा था मार्कऑफ काकुटानी थ्योरम, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको फिर से लिखना पड़ेगा। सो इट्स नोन थ्योरम, इसीलिए दोनों का नाम है। मार्कऑफ काकुटानी थ्योरम। और जैसा कि मैंने कहा था, लेट एस बी नॉन एम्प्टी convex compact subset of a normal measure space X, then every commuting family of continuous affine maps, then every continuous family of every commuting family, चलो continuous family भी है वैसे, लेकिन वो आगे लिखेंगे। every commuting family of continuous affine मैं अभी बताऊंगा, affine maps from S to itself has a common fixed point. तो fixed points are very important. तो तुमने कोई fixed point का थ्योरम किया है? शायद किया है मैट्रिक्स स्पेसेस में, किया है ना? तुमने किया होगा ब्राउअर्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, किया होगा ना? Yes, sir. What is Brouwer's fixed point theorem? Every, याद नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। Every contraction on a complete metric space has a unique fixed point. Unique fixed point का मतलब है f doesn't do anything to that function. f of x is equal to x. जैसे अगर मैं कहूँ sin x is equal to x, it is true when x is equal to 0, है ना? तो 0 is a fixed point of sin x. तो ऐसे में बोल रहा हूँ, although it's not a contraction, लेकिन अगर तुम रियल नंबर्स पे कोई भी contraction ले लो, say x/2, है ना? Of course 0 is a fixed point. No, it would have a unique fixed point on any complete metric space. तो यहाँ पर हमारा क्लेम थोड़ा उससे बड़ा है। हम कह रहे हैं कि पूरी फैमिली ऑफ मैपिंग्स जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो कम्यूट करती हैं, वो कंटिन्यूअस हैं और एफाइन है, का यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है। देयर आर अदर फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम्स, अगर तुम देख लो ऑनलाइन तो तुम्हें पता चलेगा। इम्पोर्टेंट होता है किसी स्पेस का एक फिक्स्ड पॉइंट होना, अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स्ड पॉइंट होना इम्पोर्टेंट है। देयर इज अनदर थ्योरम, चलो वो उससे थोड़ा अलग है। यानी अगर दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू हो फंक्शन के, कोई अंडर व्हाट कंडीशंस डू टू पॉइंट्स इन द डोमेन गिव अस द सेम element in the range, right? Actually we can show that R3 में अगर हम स्फीयर पे ऐसा मैप डिफाइन करें which is continuous, I think then it will have that property. मुझे उसका याद नहीं आ रहा उस प्रॉपर्टी का नाम, कि दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू होना, but that's different than fixed point but related, क्योंकि हम प्रूव करते हैं वो using that fixed point, ठीक है? तो anyways, तो कॉन्वेक्स तो तुम्हें पता है, कॉन्वेक्स अब जो S है इज कॉन्वेक्स एंड कॉम्पैक्ट, और कॉन्वेक्सिटी की प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू ऑफ कोर्स वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर, और कॉम्पैक्टनेस की होगी विद नॉर्म।
with metric, with topology. तो convex का मतलब ये है कि alpha x, if xy belongs to S, it implies that alpha x plus 1 minus alpha times y also belongs to X, where alpha belongs to the open interval 0, 1. ओके, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स का। कॉम्पैक्ट को हम बहुत तरीकों से कह सकते हैं। एक तो सबसे जनरल तरीका है, वो क्या है? Set is compact if every open cover can be reduced to a finite subcover. Every open cover of set S can be reduced to a finite subcover, and you have done it. There is also compactness की एक और property है कि if every collection of closed sets having a finite intersection property has a finite intersection. So वो भी एक equivalent definition है in terms of closed sets. So we say S is compact if every collection of closed sets of what should I say, of S having finite intersection property I think that's what it should be. I hope so. Yes, has a non-empty intersection. And then of course जो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे वो ये होगा this sequential compactness. वो तुम्हें पता है, if every sequence has a convergent subsequence then the set is compact, but that is more used when we have a metric space. metric space में ये definition और वो sequential compactness equivalent है. Okay, let's leave them. मतलब ऐसे मैं review कर रहा हूँ इन चीजों का. Now the question is, what's an affine map? Now affine map होता है which basically preserves the convexity. तो affine map का मतलब ये होता है, पहले मैं define करता हूँ. तो f from a subset S to X, मतलब any subset. यहाँ पर तो खैर मेरा convex है, लेकिन it could be any subset of X is said to be affine if f of, basically we send line segments to line segments. So Rx plus 1 minus R times Y is equal to R times f of X. It is slightly shorter than linear. ठीक है? Linear से थोड़ा कम, because R lies between 0 and 1. अगर ये सभी R के लिए हो तो then of course if a map is linear it is affine, but every affine map is not linear because of course R पे ये condition है, तो linear तो तभी होगा जब R पे कोई condition नहीं हो. It could be even a complex number or any real number between any values. तो that's affine map. कुछ चीजें इसमें हो गई. Okay, तो मुझे लगता है जो इसमें थोड़ा background था वो तो आ गया. So let's okay, let's start with the proof और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा. पता नहीं ये होगा आज की. तो let f be a family, और commuting तो मतलब पता ही है, commute मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Family of continuous affine maps from S to itself
यहाँ पे अब थोड़ा ये है, ये जो फैमिली है, मान लो f इसमें बिलोंग करता है, तो मतलब f is a map from S to S and f is continuous and affine. And you have to remember that S is convex and compact. Of course, it is non-empty. और convexity का मतलब क्या है? क्योंकि affine है, f of s जो होगा, which would lie inside S, is also convex. है ना? क्यों? क्योंकि अगर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज f is affine, तो ऐसा होगा, वो तुम कर सकते हो, मसला नहीं. Now let f belong to f. Let us take a member of this family and consider f sub n, which is equal to I plus f plus f square, means f composition f, plus f composition f n minus 1 times, divided by n, where n runs from 1, 2, 3, so on and so forth. And I is the identity. I denotes the identity map on S. Okay. Since S is convex set, S is convex set, Fn of S would be contained in S. अब ये important है कि it would be contained. And how do I prove it? It would be contained in S. Because if X belongs to S, right? What would be Fn of S? Let me write it down. Fn of X जो होगा, वो होगा I of X plus f of x plus f of x plus so on and so forth plus f applied again and again n minus 1 times, कुछ ऐसा होगा, n minus 1 times divided by n. Of course id ये belong करता है s में, और of course क्योंकि f affine है और s convex है, this belongs to s, this belongs to s, this belongs to s, right? अब अगर ये belong करता है s में, then चलो मैं इसका नाम लेता हूँ x1 plus x2 plus ये सारे के सारे s में है, तो इनका जो सेंट्रॉइड है वो भी s में होगा. So I leave it for you to prove that for a convex set this is true. For a मतलब it's can be done by induction, straightforward, क्योंकि मुझे पता है x1 plus x2 divided by 2 belongs to s, right? बाकी तुम इंडक्शन से देखोगे कि अगर x1 x2 xn belongs 2 के लिए तो obviously true है, it is the definition of convexity. But if you have n elements and then you take the average, the centroid, then that would also belong to S because of convexity. वैसे दो लाइन का होम असाइनमेंट से कहना नहीं चाहिए, मैंने बोला भी कि इंडक्शन से हो जाएगा ये. ओके, पहली बात तो है कि FNS is contained in S, right? And since S is compact, S is compact and F is continuous, and composition of continuous functions is continuous, sum of continuous finite sum of continuous functions is continuous. तो इसका मतलब Fn is continuous, which implies Fn is continuous, implies that Fn of S जो है is a compact subset of S. And since we are living inside a normal linear space, a Hausdorff space, it implies that Fn of S is a closed subset of S. ठीक है?
is a closed subset of S, because compact is closed in Hausdorff spaces. And every metric space is a Hausdorff space, therefore every normal linear space is a Hausdorff space. Okay, now what we do, so I've got this Fn of S, and now remember that I've got F is a collection, then I have created another collection F1, F2, F3 from this collection. Okay? So it becomes a big collection. So मेरे कहने का मतलब है now two indexes are running. If so, F belongs to F could be any F in this family, and I have made a bigger family by taking these maps Fn's. So we claim that any finite subconnection of Fns such that F belongs to F, दो indexes run कर रहे हैं, and n runs from 1 to so on and so forth, has a non-empty intersection. And then I would what? Then by compactness of S, I would conclude that this whole collection has non-empty intersection. जो मैंने बोला था closed sets, क्योंकि मैंने कहा है Fns is closed inside S. So which is the closed set definition of compactness in terms of closed sets. तो तुम उसको देख लोगे तो कोई हर्ज नहीं. Okay. Now let Fg be two maps. अब मैं लेता हूँ इसको क्या होगा. Okay. Now let's take a couple of members Fg belonging to this collection, and Mn be two indices which could be anywhere between 1, 2, 3, so on and so forth, and let X belong to S. Then Fn composed with G sub M applied to X, of course it must belong to Fn of S. Oh sorry, Fn of X. नहीं ठीक है, Fn of S. क्योंकि gm of X sends S to S, तो of course अगर ये S में है तो ये भी S में है, तो ये Fn S में है. And similarly gm of Fn of X also belongs to G sub M of S. इसमें कुछ नहीं है. And since it's a commuting family, मैं एक चीज लिखना ही भूल गया शायद. It's जो ना हमारी थी commuting family. मैं एक चीज मतलब ये commute करता है. Commuting family of continuous maps. चलो अब चूंकि ये commute करते हैं, right? So since F composition G is the same as G composition F, मैं क्या लिखता हूँ? Is G composition F, we see that Fn composition Gm composition X is equal to Gm of Fn of X, which for all X belonging to S. It is needless, मतलब ये तुम खुद ही कर सकते हो Fn क्या है, क्योंकि it would be ultimately in terms of F's and G's. सिर्फ उनका order हमें change करना है, we will get this thing. मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है. This implies that, अब देखो इसका मतलब चलो मैं लिखता हूँ पहले. Thus Fn composition Gm of S would belong to Fns intersection Gm of S, right? क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर है, सेम थिंग है, और ये Fns में है, ये Gms में है, क्योंकि ये दोनों बराबर चीज है.
इसका मतलब ये would be inside the intersection, यानी क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो it means they would lie in FNS as well as GMS. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब है मैंने कोई भी दो मेंबर्स यहाँ के लिए and I let n approach 1 2 so on and so forth, I found something that it has. अगर मैं कोई फाइनाइट सब कलेक्शन लूंगा, फाइनाइट सब कलेक्शन का मतलब क्या है ना, फाइनाइट सब कलेक्शन का मतलब, और जब मैं कह रहा हूं उनका इंटरसेक्शन है, तो कम से कम दो तो होने चाहिए, है ना। वो अगर हम फाइनाइट चीज दो के लिए दिखा देते हैं तो वो फाइनाइट के लिए भी प्रूव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दो से मतलब आई कैन नाउ टेक दिस FN, इसका मैं कोई, इट्स अ मेंबर ऑफ द कलेक्शन, है ना, राइट, बिकॉज composition of affine maps would be affine over a convex set, मतलब वो सभी चीजें प्रॉपर्टी होती है, तो hence our claim is justified, मतलब it lies inside this, मतलब there is something inside this as well as this, okay, so hence our claim is justified. अब अपना काम ऑलमोस्ट हो गया, यानी मैंने दिखा दिया, अगर मैं इसकी कोई फाइनाइट सब कलेक्शन लूंगा, तो अगर मैं दो ही हूं उस फाइनाइट सब कलेक्शन में, चूंकि मैं कह रहा हूं इंटरसेक्शन है, एक में तो ट्रिवियली इंटरसेक्शन है क्योंकि वो खुद एक ही मेंबर है, लेकिन अगर मैं दो लेता हूं F और G में, और NM कुछ भी लेता हूं 1 to N whatever 1 to 3 कुछ भी, so then there is something in the intersection of these two sets, which means it has a finite intersection property. Hence our claim is justified. Hence, now since, अब मैं ऐसे लिखूंगा, मैं यूज करूंगा compactness. F and S, F belongs to this F, and N running from 1 to so on and so forth is a collection of closed subsets of a compact set S. ये देखना तुम, how is this closed sets in terms of closed sets of compactness equivalent to that of open set, जो open cover की definition, ज्यादा कुछ है नहीं, तुम कर सकते हो, compact set S having finite intersection property, there is, it has a non-empty intersection. So therefore there is some X belonging to S such that X belongs to Fn of S for all F belonging to F, and for all N running from 1 2 3 so on and so forth. Now we show that जो हम चाहते हैं, it has a common fixed point. We show that ये जो X हमें मिला, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि f of x is equal to x for all f belonging to, and it is fixed point, it's a common fixed point of every member in the family. वही हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। Now since x belongs to f and s for all n running from, just a minute, ठीक है, for all n running from 1 to, ठीक है, so therefore there exists some xn belonging to S such that xn x is equal to, ये थोड़ा है, fn of xn, how do I do this, चलो मैं पहले लिखता हूँ, which is the same thing as 1 by n into xn plus f of xn plus so on and so forth plus f sub n minus 1 of xn.
अब यहाँ पे it requires some proof. Okay, अब x belong करता है f and s में, ठीक है, for all f. मैंने x को लिया fn of xn. Why would that be so? There is some xn belonging to s, so that x is equal to fn of xn. X belongs to fn of s. Okay, तो मैं कह रहा हूँ there would be some xn. हाँ, of course, वो तो हो गई, क्योंकि x is in the image of every fn of sn, है ना? तो x belongs to say f1 of x, ठीक है ना? s. तो x also belongs to f2 of x. X also belongs to f3 of x, है ना? So what does that mean? That means there exists something here. So there must exist something. Let's call it x1 belonging to s, such that f of x1 is equal to x, right? But oh sorry, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे f1 of x, ठीक है ना? यहाँ पे इसका नाम मैंने दिया x1 जो यहाँ पे है, और जो यहाँ पे है उसका नाम मैंने दिया x2, which is under f2 जो इसकी इमेज है, under f3 जो इसकी इमेज है. So I should have इसी तरह से f2 of x2 belonging to equal to x, and similarly if n of xn also equal to x. But you understand this जब तुम इसको थोड़ा रफ करोगे ठीक से. So this is what should I have. Now since f is affine, अब हमारा काम हो गया. मैं सोच ही रहा था ये पूरा होगा कि नहीं. Affine function f of x, अगर मैं इसको f अप्लाई करता हूँ, would be equal to 1 by n. Using that it preserves the convexity. It would be f of xn plus f square of xn plus so on and so forth plus fn of x. I'm using that f as I find that it preserves the convexity, therefore it preserves the centroid. As s is bounded, set s is bounded set. Why? Because it is compact in a normal linear space, right? Let s is bounded, yes. Okay. Let norm of x be less than equal to alpha for all x belonging to s. So s is a bounded set, so obviously this should happen. Then for alpha positive, then for such alpha positive, then for such alpha positive, I hope मैं ये इसको खत्म कर सकूं. F of x minus x would be equal to 1 by n into, let me write it. अब अगर इसको subtract करेंगे तो क्या होगा? देखो x, let me write it. X मैंने कहा is equal to fn of xn, that's equal to 1 by n into what? xn plus f of xn. थोड़ा से n में confusion हो जाता है. fn minus 1 of xn, right? ये तो सही है. Then I have what is f of x? F of x is nothing but ऐसा ही है. यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f square xn, यहाँ पे आ जाएगा fn of xn. अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, as you can see ये और ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास बचेगा सिंपली एक्चुअली fn of xn minus xn, right? Which would be less than equal to, चूंकि f continuous है, so let me write it as, so this is less than equal to 1 by n norm of जो है fn xn, because you have to remember that f of x belongs to s. It means f of x belongs to s. It means fn of xn जो भी यहाँ है, it belongs to s. और s के सभी एलिमेंट्स जो है
वो मैं मानता हूँ उनका जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू आर है, सो मैं सीधे लिखता हूँ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एन ऑफ एक्स एन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एन, दोनों अल्फा से लेस है, so less than 2 alpha by n, n is fixed, which would approach to 0 as n approaches infinity, because this is true for all n. है ना, ये जो n है ये इस n से रिलेटेड है और हमें पता है it is true for all n, so taking n very very large this would be 0, so it implies that f of x is equal to x, जो मैं प्रूव कर चुका हूँ, I think hence QET। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम था, मतलब थोड़ा इसमें काफी सारी चीजें हैं। आई वुड लाइक यू तुम इसको अच्छे से पढ़ो और अगर कहीं पे कुछ समझ ना आए तो मुझे बताओगे। सो आई थिंक आई शुड एंड इट हियर, थोड़ा लंबा चल गया ये आज।